Hello kids, welcome to Educate Your Child. I hope you all are doing good. Okay students, our today's topic is ascending order. Now what is ascending order? Ascending order means increase hona, बढ़ना, right? Is that clear? Okay. Now as you can see these trees, these 4 trees, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा. So what is happening over here? इंक्रीज हो रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये, राइट? फ्रॉम स्मॉल टू बिग बिग बिग. इज दैट क्लियर? एंड सेम गोज हियर. दीज आर द 3 बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ यू. सो फर्स्ट इज स्मॉल, देन बिग एंड देन बिग. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज हो रहा है. ये इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, राइट? यहाँ पे भी सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? ये सेम होता है. इफ द क्वेश्चन कम्स राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. दैट इज फ्रॉम स्मॉल टू बिग 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 बिग, राइट? इसमें साइज एज पर द साइजेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स. बट here is a glass, right? Here is a glass. These are the 4 glasses, right? अब एक ग्लास में वाटर बहुत कम है, right? Then उससे ज्यादा, फिर थोड़ा सा और वाटर इंक्रीज हुआ, फिर सबसे ज्यादा, राइट? दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ना. इट कुड बी इन द क्वांटिटी, इट कुड बी इन द साइज. सो आई रिपीट, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग 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 बिग, राइट? एंड द एरो ऑफ असेंडिंग ऑर्डर इज लाइक दिस, ऊपर की तरफ बढ़ना. Is that clear? Okay. Now let's do some exercise related to this concept. Here is write in ascending order, right? As we did in the previous topic, what comes before and what comes after. So before is जो number पहले आता है, that is a smaller number, और जो बाद में आता है number, that is a bigger number. Is that clear? From 1 to 10. 1, 0. 0 is smaller than 1 because it comes before 1. Right? Then 1. Then 2. Then 3. Then 4. 5, 6, 7, 8, 9. Right? So 9 is the bigger number. सबसे बड़ा number 1 digit में कौन सा होता है? 9. उससे छोटा 8. Right? So 0 is the smaller number. Smallest number. सबसे smallest number कौन सा? 0. उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4. So this is how the increasing order or ascending order. Okay. Now here are some numbers in front of you. These are the 1 digit numbers, single digit number. अब single digit number को हम बहुत simply कर सकते हैं. It's very simple. So वैसे तो हम क्या करेंगे? हमें we know easily that which one is smaller and which one is greater. But for the smaller kids, it's slightly difficult for them to judge between the smaller and the bigger number. So what we will do, we will tell them to start the counting from 0 to 1. और जो नंबर आते जाएंगे वो हम पहले लिखते जाएंगे. Is that clear? So let's start from 0. यहाँ पे कोई 0 है? No. Then 1, no. What comes after 1? 2. 2, no. Then 3, yes. So we will write 3 here. सबसे smallest number इनमें से कौन सा है? 3. Now what comes after 3? So we will cut 3 for confusion. In case the kids will not get any confusion, so we will mark it cross. Is that clear? 3. Now what comes after 3? 4. Is there any 4 number? No.
then 5. Is there any 5 number? Yes. So we will write 5 here. What comes after 5? 6. Is there any 6 number? Yes. 6. What comes after 6? 7. No, there is no 7. Then what comes after 7? 8. Yes, 8. And what comes after 8? 9. So we will mark it them 9. So सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, 5, 6, 8, 9. Is that clear? So पहले यहाँ पे 3 थे, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8, then 9. अब हम इसे क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, राइट? यहाँ पे 3 डॉट्स हैं. Here are 5 dots. इंक्रीज हो रहे हैं. पहले 3 डॉट्स थे, फिर 5 डॉट्स हुए, राइट? उससे ज्यादा 6 हो गए, देन 8, देन 9, right? Sorry, it's 9. Is that clear? So first of all 3 dots are here, then 5, 6, 8, 9. Is that clear, students? So this is all about when it comes to one digit number. Is that clear? Now second question is about 2 digit numbers. जब 2 digit numbers होते हैं तो हम उनको कैसे calculate करेंगे, right? The first method is start counting from 10 to, but अब 10 to हम 99 तक, so it's very difficult to speak the counting, right? So there is a very easy and simple method for 2 digit numbers. Is that clear? पहले हम 1 digit number, हम 2 digit numbers के 1 digit number पे जाएंगे, right? Put a dash on the 1 digit number. 2. Is that clear? अब हम ascending order start करते हैं. Now सबसे small number कौन सा होता है ascending order का? 1 digit number, right? So is there any 1 digit number? Yes. So 6 is the smallest number, right? इसे हम क्रॉस कर देंगे. Now we have 2 digit numbers और 2 digit number का हम first number देखेंगे, right? On the basis of their first number, we will judge which one is smaller and which one is greater number. Now 0 है इनमें कोई, so start counting. Is there any 0? No. 1? Yes. अब 1 यहाँ पे है. 1 digit number जो है इनका वो 2 times है, right? अब हम सिर्फ इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. अब दोनों में 1 digit number सेम है, right? तो हम क्या करेंगे? हम इनके सेकेंड नंबर पे जंप करेंगे, right? We will jump to the second number. Now अब इनमें से 9 पहले आता है या 7 पहले आता है? Start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 comes before, so 7 is a smaller number as compared to 19, right? So we will write here 1, 7, 17. Now we will cut it. Now 17, then 18, and then 19, right? So 19 here. Now we are left with these two numbers. Now we have to solve these two numbers, right? So it's very simple. We have already marked their first numbers, right? So start counting. Is there any 0? No. 1? No. 2? Yes. Then 3 and then 4, right? So our ascending order is 6, 17, 19, 29, 48. 6 is the smallest number, उससे बड़ा 17, उससे बड़ा 19, then 29 and then 48. 48 is the largest number and 6 is the smallest number. I hope you understand. Okay.
Now let's do one more example. Okay, 34, 31, 30, 36, 32. Now, have you observed what is most common in these numbers? Yes, they are having the same first digit number. इनके first digit numbers same है. So अगर इनके first digit numbers हैं, then we can't judge between the smaller and the bigger number. So what we will do? We will jump to the second digit number, right? We will put the dash. Now start counting from 0 to 9. Is there any zero number? कौन से वाले नंबर देखने जो हमारे ये डैश लगे हुए हैं, उन नंबर्स को हमें जज करना है, राइट? इज देयर एनी जीरो? यस. सो वी विल राइट हियर 30, 30. नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 0? 1. इज देयर एनी वन नंबर? यस. व्हाट कम्स आफ्टर 1? 2. इज देयर एनी 2? यस. What comes after 2? 3. No, 3 यहाँ है, फर्स्ट डिजिट नंबर है, लेकिन हमें तो सेकेंड डिजिट नंबर देखना है. सो 3 सेकेंड डिजिट नंबर में नहीं है, राइट? सो व्हाट कम्स आफ्टर 3? 4. इज देयर एनी 4? यस. व्हाट कम्स आफ्टर 4? 5, 6. Okay, students? So the smallest number is 30, 30, then 31, 32, 34 and 36. Now here 30 is the smallest number and 36 is the largest number. Okay, students, I hope you understand this concept very well. I repeat, ascending order means from small to big, big, big. And सबसे smallest number 1 digit number होता है, right? 1 digit number is the smallest number, and then you can judge either on the basis of their first numbers or on the basis of their second numbers. Okay, students, keep on practicing. Parents, please make your child practice it more and more, and in the whole day 10-15 times just orally ask them what is ascending order, and give them the examples of some real objects so that they can understand, and keep on practicing it so that it will be understood to you. Is that clear? Okay, students, so till then, bye, take care and have a nice day.